Anya, Yes, switch ma'am. on your cameras. Switch on your cameras. फिर मेरी शक्ल नहीं देखनी, तुम्हारी भी दिखनी चाहिए मुझे. Yes. What were we doing? हाँ. From the diary of Anne Frank. Am I audible, everyone? Yes, ma'am. Did I ask you? I'm asking to the people who are online. 52. Page number 52, na? Huh? Okay. Who was reading? Nobody was reading? I was reading? Okay. Just tell me the line. I am not so I'm second para completed. Second para completed. Grandma died wala ho gaya na? Okay, we were on that diary, right? I am not so right. 52 page number. Are 52 page number? You tell me exact location. What I is am not so worried. I'm not so worried. Okay. Okay. Are you all having the book? 10th wale na book? 9th. Workbook nahi. I'm asking them. Have you all opened your textbook? Ma'am, textbook na. Ad is going on. मेरे तो textbook में भी ad आएंगे. I'm so sorry. I'm just blank. Which book it is? एनसीईआरटी की बुक्स में भी इतने ऐड आते हैं. पेज नंबर 52 ना बेटा. Okay. I'm not so worried. Okay. I'm not so worried about my girlfriends and myself. Now, here, girlfriend doesn't mean that. See, if you consider friends, right? I'm having girls as friends. Being a girl, they are girls, they are my friends, they are girlfriends. Okay? Boys who are my friends are my boyfriends. That boyfriend, which we assume nowadays is called lover, not boyfriend. Understood? ये concept ही पता नहीं इंडिया में क्यों आया है. Anyways, so the girls who are friends are called to be as girlfriends. So I'm not so worried about my girlfriends and myself. That means she was so confident that she will secure good marks and she will be promoted with her all the girls as friends. They all will be promoted to the next grade. Okay, we'll make it. The only subject I'm not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Obviously, till the time the result is coming, everyone has to wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. What do we do after giving exam?
एक दूसरे को ऑल इज वेल, है ना, रिजल्ट अच्छा आएगा, हो जाएगा भाई, टेंशन मत ले। आजकल तो गर्ल्स में चल रहा है बहन यार तू क्या है यार। तो इट इज लाइक वो ब्रो वाला सिस्टम जो था वो गर्ल्स वालों में भी आ गया है, सिस वाला। ओके, सो नॉट टू लूज हार्ट हियर मीन्स नॉट टू गेट डिसहार्टेंड और नेवर टू नॉट टू लूज होप। ओके, इसको लगाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा तेज चिल्ला रही हूँ, ऐसा लगता है ना? फिर ठीक है, मतलब मैं नहीं चिल्ला रही हूँ, इन शॉर्ट ज्यादा तेज तो नहीं है बच्चे लोगों आवाज। मान्या, नहीं मैम, इधर ही है, थोड़ा टाइम लगता है म्यूट में, इधर ही है। थोड़ा टाइम लगता है, नहीं मतलब मेरी आवाज तो ज्यादा तेज नहीं है ना? नहीं मैम। Okay, I get along pretty well with all my teachers. That means the girls, especially if we talk about the girls, so when the schools are on, they are always the favorites of the female teachers, right? Teachers, you can say, in short, teachers. So they are always of the favorites because they do the favors. Register entry, ये work, वो work, notebook लाना, ये करना, वो करना. So students are always favorite of the teachers, especially the girls. There are 9 of them, 7 men and 2 women. So there the majority is of men. Here in India, we have the majority of female teachers. Mr. Keesing, the old forger who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much, just like me. I talk so much. Genuinely, I'm accepting this fact. I talk a lot. I am telling to everyone, online also and offline also. हाँ तो मैं बोलती हूँ. No, seriously, I speak a lot. You must have noticed the moment I entered the class, I started. वो बताना जरूरी नहीं था कि क्या हुआ मेरे साथ, बट मैंने बताया. तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम मत पूछो. मैम ऐसी नाइंसाफी। आ जाओ ऑफलाइन क्लास में, आओ कभी हवेली मैम पे. आती ही है मैम, पता नहीं क्यों मैम आती है, पता नहीं क्यों चांदखेड़ा वालों का। हाँ क्या? मैम हम आते ऑफलाइन ही है, चांदखेड़ा में इंग्लिश एसएस पता नहीं क्यों 3 दिन ऑनलाइन रखा है। अब वो तो संदीप ऐसा सर को है? पता क्यों। हाँ मैम, हाँ वैसे वो मैंने मैथ बोला था, साइंस के लिए आते मैंने बोला था, ऑफलाइन। मैंने बोला तुम लोग चांदखेड़ा वाले हो, कुछ सर ने नहीं हाँ पढ़ाया मैम। तुम्हें, कुछ सर ने नहीं पढ़ाया तुम्हें. नो मैम. कुछ पाठक सर ने, एक कुछ नहीं है, कुछ है. मैम पता नहीं मैम, यश सर ने पढ़ाया है। मैंने तो सर को ये बोला, मैंने कहा सर आई एम हैप्पी, आप मेरे ऑफलाइन के बच्चों के साथ में ऑनलाइन बच्चे जिनको मेरे साथ पढ़ना है उनको भेज दो, आई एम हैप्पी विद, आई डोंट माइंड. ठीक है, मेरे से पढ़ना है तो तुम बैठ के पढ़ो. चलो, after several warnings, we'll talk about it later, what happened today. After several warnings, he assigned me extra homework. Hey, this I explained in the last class. Who told that I have not explained? She's raising hand that I have told. This I explained in the last class, huh? Yes. I मैं समझ गई. हाँ. अरे there were 2 classes. On that day there were 2 classes. So in one class I explained. हाँ ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करते तो गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. हाँ ठीक है, चलो मान्या, तुम अगर इसको मिलते हो, व्हाट इज योर नेम बेटा? हर्ष. अगर ये हर्ष मिलता है तो तुम इसे मार सकते. जरूर मैम। वो चांदखेड़ा से आएगी तुम्हें मारने के लिए. चलो, ओके, जोक्स अपार्ट, इट वाज जस्ट अ जोक. After several, may I continue, sir? So after several warnings, now what he was doing, he was not like me कि पटाड़ा मार दिया. आ जा बेटा तू. हाँ? मैंने अभी तक. तो देखो,
अगर मेरी क्लास सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो फिर यही होगा ना, मेरी क्लास सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होगी तो फिर क्या होगा? बहुत कुछ होगा बेटा। Okay, now the thing is, now listen, jokes apart. Okay, now what the teacher used to do, he was a maths teacher, as she was very talkative, so he started assigning the works to her. Now, what was the task? The topic of the essay which was assigned to her was a chatterbox. Now, a person who is herself is a chatterbox. What is a chatterbox? The person who talks a lot. Okay, so the person who is herself a chatterbox has to write an essay on chatterbox. Okay, so now what can you write on that? I would worry about that later. I decided that, like, when I will sit to write about it, that time I'll get worried about it. I jot down the title in my notebook. Now, what did she do? When the teacher was watching, what do we do? अगर कोई टीचर अगर कोई काम असाइन करता है, वो बहुत गुस्से में दोस्त हम क्या करते हैं, चुपचाप बस वो नोट कर लेते हैं उनके सामने कि हमने नोट किया है, ठीक है, और ऊपर बड़े प्यारे से लेटर्स में हम लिख देते हैं होमवर्क, ठीक है, बकायदा डेट वेट डाल करके, और उसके अंदर ऐसा स्माइल देके मैं लिख दिया, नोट कर लिया, बुक बंद और बैग में, फिर करेंगे नहीं करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट टास्क. So this is what she thought कि जब मैं करने बैठूंगी, that time I will think about it कि मैं इसमें क्या लिखूं. Now old Fauji here means old fashioned person. Okay, old Fauji means old fashioned person. लिखना है ये. ठीक है, तो जिसका लिखा हुआ उसका मत लिखो. Annoyed. अब पेंसिल बाहर निकलेगी. What is the first rule to sit in my class? Good. मैम ये तो ऑनलाइन में लिखा चुके हो आप सबके, मतलब ऐसे. I know. बट जिन्होंने नहीं लिखा उनको लिखवा दूं ना. कोई बात नहीं बेटा, लिखने से मतलब है ना चलेगा. I have used such pencils a lot. I was having a bunch of it, अलग-अलग colors में. Okay, so annoyed means irritated or angry. Chatterbox, a person who talks a lot, or talkative. You can write small in the small one. Jotted. What is the meaning of jotted? Noted down. Noted down. Very good. Or writing quickly. Okay. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. Now, after she had completed all her homework, she noticed the homework which was assigned by Dr. Gseb. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Old habit of every student. सोचते सोचते पेंसिल चबा जानी हूँ. अब तो इरेजर आने लग गया पीछे, तो वो पता चल जाता है, वो याद दिला देता है कि मैं इरेजर हूँ, पेंसिल नहीं हूँ. पेन चबा जाना पूरा, ये तो बहुत पुरानी आदत है स्टूडेंट्स की. So she started chewing the upper tip of the pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. Now, what was her task? What do we do when the teacher assigns a long homework? An essay is assigned to you, an article is assigned to you. The first thing is thinking what to write. Then पता चलता है कि लिखना था 500 words तो दिमाग में सिर्फ 200 आ रहे हैं. Now what to do? हाँ, वो भी बहुत मुश्किल जाता है. Then what to do? Write Then with we start writing. We start writing in big letters. We start writing in big letters ताकि ज्यादा space cover हो. Then instead of half in space, we leave 1 finger distance. ऐसे finger रख के ऐसे finger रखो. Right? So this is what people think. They leave gaps, big gaps. When I tell to the students that I need 2 pages full of with the essay or article, they leave space. Words के बीच में भी और lines के बीच में भी. नहीं, फिर आराम से 2.5 पेज का लिखना. मैंने 2.5 पेज का लिखा है. तो चेक करेंगे तो पता चलेगा कि कितने पेज का लिखा है.
Today English grammar exam was there in grade 11, and that word was given pinnacle, and the child has to write the synonym of it from the passage, comprehension passage. And वो मुझे पूछ रहा है, मैम pinnacle का मतलब क्या होता है? मैंने कहा क्या है? ढूंढो. So वो conditions आती है, बच्चों में होता है वो. 11th स्टैंडर्ड का बच्चा कह रहा है तो 9th 10th के तो करेंगे. मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ. SCHOON. SGVP International. I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing has assigned me and was satisfied. Was satisfied because she has finally completed. I argued that talking is a student's trait. Now, what she has written in that it's a habit. Right? Trait means it's a habit. या तो वो उसको इनहेरेंट होता है, या तो उसकी मम्मी टॉकेटिव होती है या पापा टॉकेटिव होते हैं, इसलिए वो इनहेरेंट उसको आ जाता है. इसलिए वो भी टॉकेटिव है. ठीक है, ना तो मेरे पापा टॉकेटिव है ना मम्मी टॉकेटिव है, लेकिन मैं तो हूँ. ठीक है. Traits, it's a quality. Trait means it's a child's quality. They have that ability to talk upon. Now the people who are having this habit of talking, I'm telling you, I bet on that you give them instant topics and they can talk on anything for longer hours. Yes, and that ma'am. also logical. That also logical. Nothing will be illogical because they have Ma'am, that debates. vocabulary in their mind. Debates. They are excellent at debates as well. आप उनको instant कोई भी debate का दे दो topic and they will prepare on it. Learning capacity भी बहुत अच्छी होती है उन लोगों. If they are sitting to learn something, they can learn pages, like n number of pages. Ma'am, but they can't write. Who said? I write. As much. No, ma'am. I am a chatterbox, but writing is a bit slow. No, Then it talking. comes. It comes as an experience. I read a lot. That's why I have a hell of vocabulary in my mind. Then, before the exam, tomorrow is the exam, and today I will bring the book. This is what I have done in my MA exam. Tomorrow is my paper at 11 o'clock. Today, because I don't get time to sit and read, learn as the students do. So I read in my bus because I had to give exam in Rajasthan. So by bus, when I was going to entire night, I have studied in the bus in my phone light, phone torch light. So I had studied. I reached home. I relaxed for 5-10 minutes, and again I studied. 10 o'clock I left because 11 o'clock my exam was there. I wrote the paper. I came back and I slept. I got 70 out of 100. क्या उसमें क्या टैली करूं बेटा? बुक में से कहीं से कुछ भी आ सकता है. कॉलेज है वो. एमए के आंसर्स कैसे होते हैं? 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 5 पन्ने भरने के, और वो 5 पेजेस, मतलब इतनी बड़ी आंसर शीट होती है ऐसे लेंथ में, तो इतनी बड़ी ऐसे. मैम कुछ छूटता है? नहीं छूटता कुछ नहीं. मैं आई नेवर लीव एनी क्वेश्चन. मेरे को ऐसा होता है कि क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं और सारे जितना नहीं. यू नीड टू वर्क ऑन योर स्पीड. You have to work on your speed, because as the classes and the grades will increase, obviously the content will increase. Right now you are writing for 7 marks, you are writing 1.5 page answer, right? And that 1.5 page is like your simple register page, है ना? उसका register का page अगर हम count कर रहे हैं तो it's only 1 page, right? Whereas the 7 marks in college when you go, so it comes up to 2.5 pages or 3 pages something. Understood? If it is a 15 mark question, that means after एक answer sheet half or 20 pages की answer sheet होती है, so 10 pages will go in one answer. That is for sure. I get in college we get only 5 questions. Only 5 questions in the entire paper. Right? According to marks we have to write. A 2 marker question has 7 to 8 lines. Right? Then 8 marker and then 15 marker. सब मिलाकर के वो क्वेश्चंस बनते हैं, और उसके अंदर मैंने 20 पेजेस की 3 बार आंसर शीट्स ली है अटैच करने के लिए. तीनों में लास्ट तक में लिखा है.
पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पन्ने भरने के मार्क्स मिलते हैं, लिटरेचर में कंटेंट के मार्क्स मिलते हैं. If your content is not strong, you are not going to get any marks. बहुत कुछ आता है. Out of 50, very good. So what I want to say is be content. अभी जितना ले सकते हो उतना ले लो, जहां तक रीड कर सकते हो कर लो, क्योंकि अभी टाइम है. बाद में तो कंटेंट वाइज आपको सिर्फ वो उससे रिलेटेड ही चीजें लिखनी होती है, राइट? Whatever subject you choose, according to that you have to write. Yes, of course, in commerce you are stuck. ठीक है, बैलेंस, लेजर फोलियोज, यही सब बनाने और कुछ नहीं करना. थ्योरेटिकल तो दूसरे पेजेस में आता है. बातें नहीं, बात करनी मेरे से कर ले, एक दूसरे से नहीं करनी है. ओके, so she has written nicely 3 pages and she was very satisfied because she has written about the character traits, that how a child or a person becomes chatterbox, right? Either that will be a quality of a person who is a chatterbox, or it is transferred by the parent, right? But that I argued that talking is a student's trait, it's a student's quality, okay, and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more. So अगर मैं control करने की कोशिश कर सकती हूँ, but I'm not sure that I will be able to do that, because my mother was also a chatterbox. And that there's not much you can do about inherent traits. And the traits, the qualities which are inherited by your parents cannot be treated so easily. Okay, tackled so easily. Now, ramble means, what is the meaning of ramble? यहाँ लिखा था उस दिन, मीनिंग लिखे थे, कहाँ है ramble का मीनिंग? कहाँ है मान्या? What is the meaning of ramble? Right or wrong? Wrong or right? So that is to write or to talk on a lengthy topics in a confused manner. That is called ramble. Okay, convincing. We all understand the meaning of these words. It's not like that we don't know the meaning. It is like we are unaware what to write as meaning. Understood? To agree someone on our point. Okay, convincing, no. Convincing is capable of causing someone to believe what you are saying. Is correct. Ma'am, so that to make someone agree on a topic. If I am wrong, still if my speech is such that I am able to make you believe that what I am saying is correct, that means I am having that convincing power. Understood? Got it, Manya? Yes, ma'am. Clear it up, everyone? Okay, next is trait, which I have already given you, that is quality. Then inherited, derived genetically. Okay, now Mr. Gseb had a good laugh at my arguments. She was believing that whatever I have written, he might be laughing on it, and he will be happy that I have written so good. But when I proceeded to talk my way through the next 2 lessons, as he was happy, but as soon as she opened her mouth for the next 2 lessons, constantly talking, he assigned me a second essay. He assigned him her a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. Incorrigible means something that cannot be corrected. Not able to change, just like you. Do you accept that fact? Why? Okay, so I handed it in, and Mr. Gseb had nothing to complain about for 2 whole lessons. Now she has handed in means completed. Handed in means completed. So
when she has completed and submitted it on time that I have completed this task, he was quiet for 2 lessons. Then again, that chatterbox feeling was again into the mood, and she has got the third essay as a punishment. During the third lesson, he had finally had enough. Annie Frank as punishment for talking in class. Write an essay entitled Quack, 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 said Mistress Chatterbox. Now this time she had got this funny topic. Now proceeded means to begin with a course of action. Okay, incorrigible, not able to change. Mistress, a woman in authority or in control. Okay, the person who controls, as a female who has that controlling authority, that is called mistress. Okay, the class roared. That means they all laughed into a big roar. They laughed loudly. That is called roar. Laugh, roar. I had to laugh too, though I was nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. Now she's saying that my content was almost over. Now I cannot write more on the chatterbox. So I just laughed on my situation at that time because she was totally exhausted with that thing. It was time to come up with something else, something original. Now it was over. So everything was over, and now she has to write something original. Original means she has to write at herself. She cannot copy from anywhere. What is going on outside? Something very interesting. My friend saying, now here her friend saying she is a good poet. So she said that I'm going to help you. And this time they are going to write the essay in the poetic form. Pages on poetic form. So सर को समझ ना सर को समझ आएगा ना सर कुछ और असाइन करेंगे पता नहीं नेक्स्ट टाइम क्या खा के ले आए राइट बेटा खा के नहीं आया कुछ पेन से खुजाना है हाथ नहीं है ला मैं खुजा मेरे पास भी बहुत बड़े बड़े जस्ट किडिंग डोंट डू दैट इन्फेक्शन हो जाता है ऐसे ओके नाउ who's good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped on for joy. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him because he won't be able to understand what she has written. Ingenuity means originality. Okay, ridiculous, horrible. Not exactly horrible, in a mockery way. Someone when someone she saying that. So absurd you can say, weird. Okay, weird or absurd. Okay, हॉरिबल तो नहीं कह सकते हम अपने जनरल लैंग्वेज में रिडिकुलस को हॉरिबल बोल देते हैं लेकिन एक्चुअली हॉरिबल नहीं होता. Okay, now what is verse? What is verse? Lines written in rhythmic pattern. Okay, okay. Rod I have already told you. Here rod means laughing aloud. I finished my poem and it was beautiful. According to a poet, it's always beautiful. है ना? जैसे रोशेश की होती है ओ मामा है ना, उसके लिए तो वो बहुत अच्छी पोएम्स हैं. रोशेश नहीं पता, कोई बात नहीं. साराबाई वर्सेस साराबाई, हाँ देखना, एक एपिसोड देखने से पता चल जाएगा रोशेश कौन. हर एपिसोड में एक पोएम तो आती है. And it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments,
and to several other classes as well. Now her poem becomes talk of the town. What is the meaning of talk of the town? Ma'am, everyone Very knows about famous. it. Yes, everyone talks about it. Everybody is talking about the same thing, right? It becomes popular. Then it is said that it has become talk of the town, right? I mean, okay. I'll give you one more phrase. अगर अगर किसी को आपको बोलना है कि तुझे बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है या अपनी चीजें मुझ पे थोपने की जरूरत नहीं है, चलो not try to interfere तो बहुत easy है. Don't try to be extra smart. Don't try to poke your nose in between. चलिए तो बहुत easy होगा. सामने वाले को आपको ये समझाना है कि तुम बहुत बड़े sophisticated मैनर में आपको ये बोलना है. ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन रहे हैं. Sophisticated मैनर में आपको उसको ये बोलना है कि अपनी चीजें मुझ पे थोपने की कोशिश, मम्मी पापा को मत बोलना जा करके, ठीक है, कि अपनी चीजें मुझ पे थोपने की कोशिश मत, अपनी चीजें मुझ पर इम्प्लीमेंट करने की या मुझ पर थोपने की कोशिश मत करो, या मुझे किसी चीज में ऐसी चीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करो जो जो मेरा पार्ट नहीं है. बट सोफिस्टिकेटेड मैनर में एक लाइन में समझाना हो. वेरी फनी. इट्स नॉट करेक्ट. डिड समवन से समथिंग? मैंने नहीं सुना. Don't try to land your bees on my soup. सामने वाले को आधा तो समझ ही नहीं आएगा, तो वैसे ही साइड हो जाएगा. ठीक है. Don't try to land your bees on my soup. एकदम मतलब स्वाग के साथ बोलना. Don't try to land your bees on my soup. Ma'am, is it soup? Yes. Ma'am, is it Soup on my soup. Don't try Okay. to land your bees on my soup. मैंने हनी बी कहा. मैंने हनी बी कहा. ऐसा किसने कहा बेटा? बीज तो बीज होती है, हनी बी थोड़ी बोला मैंने. बीज मतलब मक्खी, वो गंदी सी मक्खी जो सब जगह घूमती रहती है फिर तुम्हारे खाने पे आके बैठ जाए. बट उसको नॉर्मली बीज कहा जाएगा, ऐसे में बीज कहा जाएगा. डोंट ट्राई टू लैंड योर बीज ऑन माय. एटीट्यूड के साथ बोले सामने वाले को समझ ना आए तो हम क्या करते? नहीं, वो देखो, इंग्लिश एक इकलौती ऐसी लैंग्वेज है कि जिसके अंदर एक्सप्रेशन बहुत कुछ बोलता है. ठीक है. व्हाट, अगर मैं ये बोलूं व्हाट, व्हाट, तो बहुत सारे तरीके हैं किसी चीज को कहने के. समझ में आया? मार्क्स हटा फिर बोल. बेटा ये तीसरी से चौथी बार है, ये बार तो क्लास के बाहर जाएगा. जाना पहली बार बोला मैं. हाँ, छोटा चेतन वो उसने बोला, वो मैंने सुना. मेरे एक ही कान में ईयर लगे बेटा. ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं चलता कि कौन क्या बोल रहा है. See, a mother always has 4 eyes. 2 here, 2 at back. कभी कभी एक्स्ट्रा स्मार्टनेस बहुत भारी पड़ जाती है. पता है, टीचर को जितने लाइट मूड में रखोगे ना तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा. वरना क्या होगा, घाटा तुम्हें ही है, मुझे कोई घाटा नहीं है. आई विल बी स्ट्रिक्ट. यू वांट अ स्ट्रिक्ट टीचर, योर चॉइस. Okay. On the contrary, Mr. Keesing always making jokes these days. Now, with that, she ended up the writing. Yours, Annie. Okay. With that, she ended up the writing. Contrary means, what is the meaning of contrary? On the contrary, he was better than what he was earlier. So what will be the meaning of contrary here? Difference. Understood? Opposite in nature. Contrary here means opposite in nature, direction, meaning, opposite of something. Okay. So with this, your chapter is over.
What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? Bolo, bolo. Yes. Yes, Manya. Ma'am, Annie wanted, or the situation that was where she wanted to write the diary was she was alone. She didn't have any friend, and she's type of chatterbox. She cannot keep quiet, so she बहुत need बहुत to आगे write. चले गए हम बच्चा हम बहुत आगे चले गए बहुत आगे चले गए वापस आ जाओ स्टार्टिंग में आ जाओ बिगनिंग ऑफ द चैप्टर why was she afraid of writing that diary this is what I explained उसका आंसर तुम्हें नहीं सुनाई देगा तुम्हारा आंसर उसको सुनाई देगा इसलिए कह रही हूँ 2 मिनट रुक जाओ yes Manya did you find it No. no yes Because no one will read the diary of a 13-year-old. yes she was afraid that nobody is going to read a diary of a 13-year-old school girl right so it was the first time she was writing a diary and he was writing a diary and she was afraid. She felt that later nobody is going to or no one will be interested to read a diary of a 13-year-old schoolgirl. Understood? Both these facts made it a strange experience to her because she was two things. First, she was writing for the first time and second was this. Okay? Got it, Manya? Yes, Yes. ma'am. Next question. Why does Annie want to keep a diary? No best friend, right? And I wanted to keep a diary and write in it because she had a lot of things going on in her mind, and she was not having that best friend with whom she can share all this. Okay? So she decided to maintain a diary. Why did Annie think she could confide more in her diary than in people? Yes, because papers are having are the best absorbers, plus they are having more patience than people. People is already plural. Okay, so she chose to confide more in her diary because she felt there was no friend who could listen to her with enough patience as a diary could do. Why does Annie provide a brief sketch of her life? Yes, online people. Why does Annie provide a brief sketch of her life? Yes. Adipriya, sleeping today? Moksha, Chirag, Vidhi, Tanisha. Tanisha to बिना mic के है. Adipriya, what happened, beta? Who has raised the hand? Yes, Moksha. Moksha. I'm not able to hear you, beta. Anyone from here? No one? Okay. And it feels it would be weird to just simply jot down the facts without giving the background. Remember? She thought about it. Okay, that's why she prepared a brief background. Okay, in case someone might read it in future, he or she won't be able to understand why the person has written this, written these facts if the background will not be provided. That's why she has given a brief sketch of the background. Understood? What tells you that Annie loved her grandmother? Ma'am, would you repeat? Because तो आएगा ही नहीं. What tells you that Annie loved her grandmother? And it tells that Annie had lived with her grandmother more than her parents. No. That is okay. That could be included. But why? How can you say that she was very close and she was remembering her grandmother? Because their parents were. And she died in 2021.
Because Some candle of her grandmother was also lighting where other 4 candles were there. Mhm. Okay. The fact that Annie spent more part of her childhood with her grandmother is self-sufficient to imply connection between the two. First thing. Okay, second thing, also she explicitly mentioned in her diary that she misses her grandmother. More than anyone is uh, aware of is evident enough that she loved her grandmother. In short, small way, you can say that she has mentioned in her diary also that she misses her grandmother. So we can say that she was very connected to her. Okay. Why was Mr. Keesing annoyed with Annie? Yes. As she was a Because chatterbox. she would not stop talking during his lectures. Now, what did he ask her to do? Write essays on different topics. Assignments, we have to say, or essays, yes. He gave her, as a punishment, he gave her essays or assignments as punishment. Okay, how did Annie justify her being a chatterbox in her essay? her mother was also a cat. Okay. First thing is like she has got her habit. It's a student quality. First thing is this. Second thing, she got her habit from her mother. So she will try to control it, but she's not sure that she will be able to change it because that was inherited. Okay. What made Keesing allow Annie to talk in class? Truly expressing the chatterbox characteristics. No. Third assignment, remember what she has written in her third assignment? She has written a satirical poem, right? So, on being given the third assignment as punishment, Annie wrote a satirical piece which was quite promising. Thus, finally, the professor allowed her to talk. He got that thing in his mind that whatever I had assigned, the girl has completed, and with her whole effort, in fact, every time I change the topic, and she has changed the view of presentation, right? Every time she has presented something new. Understood? Next, was Annie right when she said that the world would not be interested in the musings of the 13-year-old girl? Yes, ma'am. When she was saying, yes, As she yes, Manya. mentioned that she herself was not interested to read the diary of a 13-year-old girl. Yes. So yes, Annie was right in thinking that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl, as she was a common girl, right? And no one would want to know her feelings. So no one would read her diary. कितने लोग आते कितने जाते कितनों की मूवीज चलती है जो फेमस है वही है या किसी को अगर हाईलाइट कर दिया जाता है तो हो जाता है राइट अदरवाइज बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो अच्छी हैं लेकिन कितनों ने देखी है वेरी रेयर राइट so if I talk about like who has seen the episodes or the seasons of A Good Doctor. ओके चलो ये तो हॉलीवुड की बात हो गई मैम हॉलीवुड तो बहुत दूर हो गया बॉलीवुड के नहीं देखी राइट कॉलर बॉम्ब देखा है कॉलर बॉम्ब शॉर्ट मूवी Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए हाँ, ma'am. हाँ ठीक है so very stupid task they have taken but in a very efficient way they have presented right it starts from Tughlaq and that has been classified in this short movie. It's a very good movie if we see. The same boy is there who was there in Chiller Party, the boy who used to wear his father's underwear in the march with the belt. Right? Remember Chiller Party? In that to Yes, save ma'am. that dog, they all protest on the road. And he was the only one, Bandia,
who was never used to wear the underwear, and that day he wore his father's underwear, and on the top of it he tied a belt so that it should not fall down. So that boy is grown up now, just like you all. So he is also there, and he starts the thing, and he says to his father that whatever you have done, you might be regret of it, but that I had to pay. It happens. अगर जैसे हम रह रहे जहां पर, इट्स अ कॉमन एग्जाम्पल, कहीं पर भी हम रह रहे, हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जो बहुत ही अच्छा है, उसके जितना अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि उसके पापा ने, अब वो किया था या नहीं किया था, इसमें तो मूवी में तो चलो सच है कि किया था उसने, बट जनरली अगर देखा जाए कि एक फ्रॉड सामने आता है जिसमें उसके फादर का नाम आता है, ठीक है, पुलिस आती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, इंप्रेशन क्या होता है, सबसे पहले पेरेंट्स बोलते हैं उस बच्चे से बात करने की जरूरत नहीं, राइट, कि उस बच्चे से बात करने की जरूरत नहीं है। अब गलती थी या नहीं थी वो तो कोर्ट बाद में डिसाइड करेगा, कल्प्रिट उसे हम लोग सब पहले बता सकते हैं विदाउट नोइंग द सिचुएशन। क्यों? क्योंकि हमारे सामने वो सिनेरियो ऐसा है। पुलिस का किसी के घर पे आ जाना, बच्चा पानी पीना, पानी पी के आ जाओ, पुलिस का किसी के घर पे आ जाना या किसी को ले जाना, हम बिना कोई रीजन जाने उसको कल्प्रिट बना देते हैं, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विक्टिम एंड कल्प्रिट, ठीक है। कल्प्रिट वो होता है जिस पर, सस्पेक्ट और कल्प्रिट में फर्क होता है बेटा, सस्पेक्ट वो होता है जिसपे शक किया जाता है, ठीक है, कल्प्रिट वो होता है जिसपे इल्जाम कंफर्म हो जाता है, ठीक है, एज अ सस्पिशियस पर्सन और सस्पेक्ट बना करके उसको लेके जाते हैं, लेकिन कल्प्रिट हम बना देते हैं, राइट, और रिजल्ट जो भी आए, चाहे वो बरी हो जाए चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हम वही सोच लेके चलते हैं कि नहीं ये गलत है, वो गलत है इसलिए उसके बच्चे भी गलत है, और उसमें उस पूरे सिनेरियो में बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी कहीं पर भी, बच्चे ने तो अपने पापा को नहीं बोला था, अगर उन्होंने किया भी है तो, राइट, फिर क्या होता है, इट्स अ सिंपलेस्ट थिंग, फिर क्या होता है, वो ना चाहते हुए भी वो बच्चा उस डिप्रेशन का शिकार हो जाता है जो वो नहीं चाहता था कभी भी लाइफ में, फिर वो पाथ चूज करता है जो उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा होता, बहुत रेयर ऐसा होता है, 100 में से 0.001% बच्चे ऐसे होते हैं जो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि आई एम नॉट दैट वन, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट बिफोर यू स्पीक, वो कर भी जाते हैं, लेकिन वो 0.001%। 10,000 में से तो वही चीज है, बाकी लोग या तो क्राइम का रास्ता अपना लेते हैं, या वो अपनी लाइफ इस तरीके से स्पॉइल करते हैं कि ना तो वो स्कूल जा पाते हैं, क्योंकि हर तरफ उनको वही चीज झेलनी पड़ती है, ना वो स्कूल जा पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, और फिर उनकी लाइफ उनके फादर ने हेल नहीं बनाई, किसने बनाई? सोसाइटी ने। अंडरस्टूड? तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये चीज इसलिए बता रही हूँ, इन केस कभी कुछ ऐसा होता है ना, आई नो पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट, 110%, नो डाउट इन दैट, बिकॉज पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को हर चीज से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन थिंकिंग बदलना, ठीक है, अपनी सोच में ये बात मत रखना कि वो गलत है, क्योंकि पेरेंट्स आपके स्कूल नहीं आते, तो जब वो बच्चा स्कूल आता है ना, उस टाइम अगर वो सपोर्ट उसे मिल जाए अपने क्लासमेट्स का, अपने मैनेजमेंट का, अपने स्कूल का, समझ रहे हो, तो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी के फादर की ये मजबूरी हो कि अपने बच्चे का पेट पालने के लिए उसको चोरी करनी पड़ी और पुलिस पकड़ के ले जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा चोर बन जाए, इसलिए उसने उसको स्कूल में भी डाला है और उसको पढ़ाना भी चाहता है, तो वहां उसे सपोर्ट कर सकते हैं इमोशनली, इंस्टेड ऑफ मूवी पुशिंग हिम डाउन, इंस्टेड ऑफ पुशिंग हिम डाउन कि ये तो चोर का बच्चा बेटा है तो चोर ही बनेगा। अंडरस्टूड? और अगर हो भी तो मैं तो ये कह रही हूँ कि हमने एक स्टोरी पहले भी पढ़ी है, राइट,
एक स्टोरी हमने पहले भी 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़कर आए हो, दूसरी अभी आप द बेगर पढ़ोगे। 9th स्टैंडर्ड में एक स्टोरी पढ़ी है ना, जिसके अंदर क्या नाम है उस बच्चे का, इन विच द चाइल्ड वाज अ थीफ। थिफ स्टोरी। हाँ द थीफ स्टोरी। मैं तो अभी 10th में है तो। 10th में है ना, हाँ 10th में है ना, हाँ तो देखो, हाँ ठीक है, हाँ उसमें वो बेगर्स वाली है, सॉरी। तो थीफ स्टोरी क्या पढ़ा आपने? चोरी था ना वो बच्चा, ना तो उसके पेरेंट्स चोर थे ना कुछ थे, लेकिन वो हालात की वजह से वो चोर बना था। लेकिन एक बंदे की अच्छाई ने उसकी वो आदत भी छुड़वाई और उसे एक अच्छा इंसान भी बना दिया। सो थिंकिंग मैटर्स अ लॉट। तो ये सिर्फ एक चोरी चकारी इन सब से रिलेटेड नहीं है, इट इज रिलेटेड टू एवरीथिंग। If your friends are having any bad habit, you are the only one who is capable enough to drag him out of that thing. ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होती, हमें नहीं पता कि सिचुएशन क्या है, बैक ऑफ द माइंड उसके क्या सिचुएशन है। लेकिन हमें आज का तो पता है, सामने हमारे जो इंसान है उसका तो पता है ना। विदाउट आस्किंग हिम, comfort him or her, try to bring that person out of that zone with your friendship. उतना ट्रस्ट ले आओ कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके जैसा आप बोल रहे हो, जो समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो समझे। ठीक है? ओके, so there are some examples of diary or journal entries in the before you read section. Compare these with what Annie writes in her diary. What language was the diary originally written in? In what way is Annie's diary different? Now there is a slight difference between journal writing and diary. डायरी में हम सिर्फ लिखते हैं और बड़ा इनफॉर्मल सा लिखते हैं। जर्नल राइटिंग जब होती है ना, तो उसमें इमेजेस भी आती है, कई लोग इमेजेस भी पेस्ट करते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, और काफी फॉर्मल राइटिंग होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये जर्नल्स कोई भी रीड करने वाला है, कोई दूसरा इंसान रीड करने वाला ही है, तो बड़ी फॉर्मल सी लैंग्वेज होती है उसकी। अंडरस्टूड? सो एनीज डायरी वाज एक्चुअली रिटन इन डच. Her diary is different from that of others on various aspects. She had named her diary Kitty. She thought of it as her only true friend. She could confide in Kitty. She treated it as another person because, according to her, paper has more patience than people. She started by writing Dearest Kitty and ended the account by writing Yours Annie. Whereas when you do the when we are making the journal entry, when we are making the journal entries, that time there is no such introduction at the end or in the starting. Only pictures are there or related information. यहाँ घूमने गए, वहां घूमने गए, ये किया, वो किया, बस वही खत्म. Introduction of the activities is there. Okay. Why does Annie need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? फर्स्ट का आंसर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, right? That why she has given the brief sketch of her family and all, because she was into that, thinking that nobody is going to read a 13-year-old schoolgirl's diary, and if they are reading, then if they are not aware of the background, they won't be able to understand that in what situation the writer has written that diary, right? Now, does she treat Kitty as an insider or outsider? Of course, insider, because she was treating her as only true friend. How does Annie feel about her father, her grandmother, and Mrs. Carperis and Mr. Keeping? Now here they have given 4 characters, so you have to write it in that way. Every character's impression on this. What was her name? Annie. According to Annie, her father is the most lovable person of the world. Okay. She could love and miss her grandmother more than anyone.
She was on good terms with her teacher, except the old Fauji, Mr. Keesing, who taught him mathematics, them taught them mathematics. The headmistress, Mrs. Cuperus, was her class teacher, and both were very close to each other, right? Mr. Keesing often punished Annie with extra assignments as a punishment for her talkative nature. These indicate that Annie was affectionate and a loving person. Now, only one line is given about each person, right? Connection between Annie and that person is given in one line, right? No change of paragraph is there. And at the end, we simply have to write that she was a very loving and affectionable person. Okay? Okay? Understood the chapter? So in the next class, we are going to take one poem. मैम इस संडे इंग्लिश की एग्जाम फिर किसने बोला? भाई मेरे पास में 2 बंडल है, मैं भी चेक ही नहीं कर पाऊंगा, मैं मना करके जाऊंगा। ये संडे नहीं रखना, नेक्स्ट संडे रख लेंगे। पूछ रही हूँ या मिडिल में करनी, मैं पूछ लेती हूँ ऐसा होगा तो। और नहीं तो अगर एग्जाम है तो भी आई विल प्रिपेयर दैट गूगल फॉर्म, दैट विल बी इजियर फॉर यू, और इंस्टेंट मार्क्स भी आ जाएंगे तुम लोगों को। ठीक है हर्ष? मैम ये इसमें से हटाओ ना, होस्ट नहीं, होस्ट चेंज करना है, ऑन करवाना पड़ेगा। इसका कौन है? ओके सही है। रुको, ये आपका कौन सा है? मेरा भी है नहीं, बाहर आ जाइए। यस, यहाँ पे स्टार्ट कर सिलेक्शन। क्या हुआ? बारिश? बारिश नहीं है, नहीं है, निकलो भाई निकलो। हाँ अरे रुको, 2 मिनट रुको, रुको। हम लीव हो जाए मैम। कौन है? हेलो मैम। मैम नाइट जीएससीबी का लेक्चर नहीं होने वाला? मैम 10 सीबीएसई लीव कर दे। हम लीव करना है क्या? सारे फोन रखे बैठे। हाँ वही साइंस में बचे मैथ्स ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है मैम। अरे मैं निकली। हाँ मस्ट पे करना, मस्ट कर दिया ना। अरे भाई मैम बुक। अरे 2 मिनट।
हाँ, नो इश्यूज। चलो, लेट्स स्टार्ट। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग टू एवरीवन। बेटा मेरा बुक जरा पास करोगे? थैंक्स अ लॉट। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। Okay, last time we stopped at tropism part, right? Yes, ma'am. So have I made you write all the stimuli and type of tropism? Yes, ma'am. Chalo, let's go with the inset of it. मैम उसका डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देना था। वही कर रहे हैं बच्चे। चलो, the movement of a plant part in response to light is called phototropism. Ma'am, Yes. ma'am, I am connecting from second device. Can you re-add me? Yep. ओके, फोकस। 2 मिनट बाद में लिखो, पहले बेटा समझ लो। अब फोटोट्रोपिज्म मतलब प्लांट का ग्रो होना टूवर्ड्स लाइट या फिर अवे फ्रॉम द लाइट, बट हियर द स्टिम्युलाई इज लाइट। ठीक है, स्टिम्युलाई से जो आप रिएक्ट करते हो, चाहे अपोजिट या टूवर्ड्स, वो पॉजिटिव नेगेटिव में जाएगा, लेकिन वो ट्रोपिज्म स्टिम्युलाई है तो उस हिसाब से ट्रोपिज्म डिसाइड होगा। जैसे स्टिम्युलाई अगर ग्रेविटी है तो जियोट्रोपिज्म, अभी हमने लाइट पढ़ा, दैट इज फोटोट्रोपिज्म। तो प्लांट ऐसा है सीधा, अभी इधर से सनलाइट आ रहा है तो ये इस तरफ अगर टिल्ट होके ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। सन इधर है और इस तरफ ग्रो हो रहा है तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अच्छा, हमको अगर देखना है, जैसे सनफ्लावर प्लांट होता है, ठीक है, उसका ना एक अजीब ही कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब इस साइड सन है, अब मान लो इस साइड ग्रो हो रहा है तो मैंने प्लांट को इस साइड घुमा दिया तो अब ये उल्टा हो गया, तो फिर से ये ऐसे ही ग्रो होने लगेगा। योर प्लांट
will move towards sun no matter which direction you tilt it down. समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is what it is, phototropism. Likewise, up away मतलब negative, towards मतलब positive. सेम कॉन्सेप्ट. अभी यहाँ पे लाइट लिखा है, वहां पे आएगा ग्रेविटी, वहां पे आएगा केमिकल. मैं अलग अलग प्लांट्स के हिसाब से एग्जाम्पल देती जाऊंगी आप लोगों को. ठीक है, अभी आप इतना लिख लो, फिर आगे करते हैं. From side, please. नहीं, आज नहीं. बेटा आप एक काम कर सकते हो, जो लास्ट बेंच पे बैठे हो, एनी वन ऑफ यू, प्लीज किसी को बोल के ये मार्कर भरवा सकते हो. बहुत लाइट है ना, तो दिखेगा नहीं फिर. इसको बोलो ना, वो बाहर भैया बैठे हैं ना, उनको बोलो कि हाँ ब्लैक है, तो ब्लैक इंक भर के दो. Done, ma'am. थैंक्स. मैम हम्म. मैम ये आप कौन सा चैप्टर करवा रहे हो? मीन्स मैं तो जीआईसीबी की हूँ और मैंने लास्ट चैप्टर 15 का किया था. और उसमें चैप्टर 7 बेटा. मैम तो हमने तो लास्ट ऑनलाइन में लास्ट चैप्टर 15 का किया था और आपने बोला था नेक्स्ट चैप्टर 2 एसिड्स एंड बेस चालू करेंगे. हाँ, लेकिन अभी 7 किया है, बहुत रिएक्शंस हो गए हैं ना, तो इस हिसाब से 7 किया है बेटा. मैम इस चैप्टर 7 का इसके आगे चलाया है? हाँ, बस एक ही लेक्चर हुआ है जिसमें हमने बेसिक एक्सप्लेन किया है बेटा कि मैम प्लांट्स. ये ऑफलाइन में हाँ, करवाया होगा ना आपने? नहीं ऑनलाइन भी था. ऑनलाइन में भी बच्चे पढ़े ही है. आप शायद नहीं होंगे लास्ट लेक्चर में मेरे ऑनलाइन के. ओके मैम. मैंने क्लास में से ही लेक्चर लिया था. ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हो ना अभी, यस मैम. उसी अरेंजमेंट में लेक्चर लिया गया था ऑनलाइन. ओके मैम. हाँ, तो उसमें करवाया था बेटा. तो ये तो हालांकि हमारी सेकंड लेक्चर है. बच्चों आपको इस साइड का दिख रहा है? यस हाँ मैम. मैम, दिख रहा है. यस मैम. हाँ बेटा. चलो करवाती हूँ वो भी. पहले ये कर ले, फिर तुम ही आंसर दे देना. ठीक है. जियोट्रोपिज्म, बेस्ट एग्जांपल हियर वी हैव इज अ, मुझे बताना मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ.
Okay. मैम प्लांट. Yeah. So this is root. It is growing downward. It is towards gravity. यस मैम. तो इसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. अब शूट सिस्टम, अपोजिट टू ग्रेविटी, इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. मैम मैंग्रोव ट्री जो होता है वो तो ऊपर ही होता है ना, मतलब रूट्स तो बाहर ही होती है ना. पर ग्रोथ तो नीचे की साइड होती है ना, बाहर होती है, बट इट द ग्रोथ इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स ना. हाँ तो फिर मैम वो भी ऐसा ही होगा ना, सेम. हाँ, क्योंकि मैंग्रोव जो होता है वो ऐसे तो ग्रो होता नहीं बेटा, रूट्स ऐसे ऊपर आ जाए. ग्रोन रूट्स ऐसे ही है ना, नीचे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. सेम फिनोमिनन मैंग्रोव्स में. ओके मैम. चलो नेक्स्ट, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया. इसके बाद कीमोट्रोपिज्म पढ़ते हैं. चलो थर्ड दो हेडिंग कीमोट्रोपिज्म. ये तुमको ना सेम डेफिनेशन लिखना है. सेम डेफिनेशन. ग्रेविटी के बदले केमिकल कर दो और जियोट्रोपिज्म के बदले कीमोट्रोपिज्म. आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, समझना है. शू फ्लावर, हिबिस्कस. ठीक है, तो इसमें अभी केमिकल कहाँ? हाँ बेटा. मैम थोड़ा साइड में करो, वो दिख नहीं रहा है ड्रॉ.
जो काम का है वो देख ही रहे हो आप लोग, ये वाला ही काम का है। अब ये ना पोलन है, पोलन जो आता है ना, पोलन ग्रेन्स, वो है। ये क्या करेगा, ये पाइप ऐसे करके, ऐसे करके अपने इसमें ना ऐसा सेल होता है छोटा सा, तो वो लाके इधर फ्यूज करता है वो, ताकि पूरा सीड बनता है। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। ओके, क्वेश्चन मेरा ये है कि इसको कैसे पता कि यहीं पे आना है। ये इधर से भी तो ऐसे जा सकता है नीचे से, राइट, इधर से सीधा भी तो जा सकता है, तो ये इधर से ही ऐसे क्यों आता है? एनी आंसर? सी, यहां से ना, ये जो जंक्शन है ना, यहां से शुगर रिलीज होता है, ठीक है। अब रिलीज यहां से होता है, ऊपर आते आते कंसंट्रेशन कम होता जाएगा शुगर का। तो मान लो कि यहाँ पे पोलन है, तो पोलन ने ये शुगर को सेंसिटाइज किया, वो उसके लिए स्टिम्युली हो गया, और जहां जहां शुगर बढ़ता जाएगा ना, वो उस हिसाब से ग्रो होता जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा। समझ आया? इसीलिए वो ऑलवेज यही पाथवे फॉलो करता है ना, वो इधर से ऐसे जाके ऐसे जाता है, क्योंकि जैसे इधर गया शुगर कम हो गया, इधर सबसे ज्यादा शुगर है ना। सो दिस इज अ रिस्पॉन्स ऑफ पोलन towards the chemical stimuli. So this is known as chemotropism. Understood? Online? You guys understood? मैम एक बार वापस, हैं? मैम एक बार वापस समझाना, समझ नहीं आया। यार तुम आते क्यों नहीं क्लास में? सब समझ आ जाता। चलो देखो, ये पोलन ग्रेन है, this is gonna infuse this cell which is present in it. In this is ovary, basically ovary of the plant. तो ये ओवरी में डालेगा इसको। क्वेश्चन है कि ये इसका ट्यूब है जो ग्रो होगा ये पोलन को, ऐसा लाइक कार्पेल के आने के बाद, इसे हम कार्पेल कहते हैं पूरा। सो ये जो पोलन है उसका ये जो ट्यूब है वो इसी डायरेक्शन में क्यों ग्रो होता है? द रीजन बिहाइंड दैट इज, यहाँ से शुगर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, ऊपर जाते हैं। यहाँ बहुत सारी शुगर है, यहाँ पे कम कम कम, तो ये थोड़ा थोड़ा सेंसिटाइज करके अपना ये ट्यूब उस तरीके से ग्रो कर लेता है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस मैम। हाँ, तो ये एक शुगर है, शुगर इज अ केमिकल, यस और नो? यस मैम। हाँ, तो उस तरफ बढ़ा ना पोलन ट्यूब, इसीलिए इसे कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। गॉट इट? ओके, गॉट इट। यस मैम। चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग को समझ आ गया ना? आई एम रबिंग दिस, आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाओगे? इसमें कुछ लिखना नहीं है ज्यादा, और ज्यादातर तो ये आता भी नहीं है, नॉर्मली हम डेफिनेशन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। सेम लिखना है, चलो इस बार मैं भी लिख लेती हूँ, बस केमिकल के जगह वाटर कर दो।
अच्छा, इसमें भी जियोट्रोपिज्म जैसा सेम होगा। देखो, ये रूट है, ठीक है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। समझ लो ये लैंड है और ये रूट ग्रो हो रहे हैं, तो पानी इस साइड ग्रो हो रहा है, मतलब पानी इधर होना चाहिए। अब मैं एक काम करती हूँ, पानी इधर नहीं है, पानी इस साइड है और यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है बकेट में से, जो ग्राउंड के अंदर ही हमने रखा है। तो ये रूट ना इस साइड ग्रो करने लगेगा। समझ आया? जो ये नीचे जा रहा था उसके बदले इसने अपने टिप को टर्न करके पानी की साइड कर दिया, टूवर्ड्स वाटर। और शूट सिस्टम तो अपोजिट वाटर, तो ये हो गया नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। रूट सिस्टम हो गया पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। समझ में आया बेटा? आपको Yes, समझ ma'am. आया? ओके, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लो और पॉजिटिव नेगेटिव करके रूट और शूट लिख लो, बस खत्म। फिर तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर ड्रॉ करना है तो अपने हिसाब से। अभी तुम्हारा आंसर आएगा, जो पूछा था ना तुमने मुझे, वो अभी आएगा। बाकी सारे नेगेटिव ले लो ना, पोलन को पॉजिटिव ले लो, बाकी सबको नेगेटिव। चलो, नेक्स्ट हेडिंग इज थिग्मोट्रोपिज्म। हाँ, लिख लो ये, उसके बाद दे दो हेडिंग थिग्मोट्रोपिज्म। मैम इसमें भी सेम डेफिनेशन है ना? सेम डेफिनेशन, और वाटर लिखा है वहां पे टच आ जाएगा। हाँ ओके मैम। टच, जो कोरोना में नहीं करते। अभी उस साइड का बोर्ड रब कर दो बेटा, कीमोट्रोपिज्म वाला। हाइड्रो लिख लिया आप लोग ने सबने? चलो ठीक है। इसके एग्जाम्पल जो है ना वो है टेंड्रिल्स, क्योंकि देयर इज डायरेक्शनल ग्रोथ।
ड्यू टू touch and wind. Tendrils are climbers also. ठीक है, तो जैसे ये वॉल है तो प्लांट इधर है, इधर से इधर से इधर से अपने हिसाब से वो ग्रो हो जाएगा. अब ऐसा तो एनी टच, टच मतलब क्या हुआ, इसने इधर टच किया. अब प्लांट तो ऐसा ग्रो होता है ना, तो इसको तो ऐसे बढ़ना चाहिए. तो ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों है? टच के अलावा और क्या है? विंड। तो विंड भी असर करेगा. सो इट्स नॉट जस्ट टच, इट इज ऑल्सो विंड. पर थिग्मो का मतलब टच. ठीक है, क्लियर? यस। यस. कौन सा प्लांट है ऐसा टच वाला जिसको टच करते हैं तो बंद हो जाता है? मैम टच मी नॉट टच मी नॉट प्लांट। हाँ, याद रखना आप लोग. चल, एग्जाम्पल में टच मी नॉट लिख लेना. छुई मुई कहते हैं उसे. मैं सबके एग्जाम्पल्स देख लेती हूँ, अगर कुछ है आपको इसमें लिखवाना तो ये लिख देते हैं. इसके बाद हम जाएंगे नेस्टिज्म पे. ठीक है, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट. आई जस्ट सी अगर कुछ रह गया है लिखवाना तो. अच्छा, किसी ने मुझे पूछा नहीं फोटोट्रोपिज्म में मैम ऐसा क्यों होता है कि सन की तरफ की प्लांट बेंड हो जाता है? ऐसा किसी ने पूछा नहीं मुझे. ये इसलिए होता है बेटा कि ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ना, वो बेसिकली उसके टिप पे होता है, तो वो ग्रोथ प्रमोट करता है ना सनलाइट की तरफ, तो प्लांट बेंड हो जाता है टुवर्ड सनलाइट. ठीक है, और एक चीज, ऑक्सिन हार्मोन इंक्रीजेस द रेट ऑफ शूट सिस्टम बट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रूट ग्रोथ. लिख लो आप ये. गिव हेडिंग फोटोट्रोपिज्म. हाँ, फिर से दो फोटोट्रोपिज्म हेडिंग. उसमें लिखो plant gets tilt towards light due to auxin hormone AUXIN. Next point. Auxin hormone increases the growth of stem but it decreases
the rate of growth of root नेक्स्ट हेडिंग तो थिग्मोट्रोपिज्म डैश करके लिखो हाँ हाँ बस नेक्स्ट अभी फोटो हो गया अभी थिग्मो they are for directional growth of plants especially climbing plants okay full stop climbing plants दूसरी बार लिखो climbing plants have climbing organs called tendrils tendrils okay chalo next thing we are going to write is nastism
हाँ, तो नास्टिज्म क्या होता है कि हमने क्या बोला कि लाइट है, टच है, केमिकल है, उस तरफ कोई चीज ग्रो होती है तो हम उसे कहते हैं भाई ट्रोपिज्म। लेकिन जिसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, मतलब लाइट हो या ना हो मैं तो ग्रो होऊंगा, मुझे कोई भी स्टिम्युलाई असर ही नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय स्टिम्युलाई। समझ गए सब लोग? बच्चों जो ऑनलाइन है यस वो मैम। सब, हाँ ठीक है। अभी लेट्स टॉक अबाउट मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका क्या है? द नेम ऑफ द प्लांट is टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा पुडिका, चुई मुई सब एक है। अब देखो, वो प्लांट वैसे भी क्लोज होता है, वो प्लांट को ऐसे टच करोगे तो भी क्लोज होता है, लेकिन क्या ऐसे टच करते हैं, हम उल्टा टच करेंगे तो क्या ऐसे वो क्लोज होगा? ऊपर से ही क्लोज होगा। समझाती हूँ। ये पेन है, ठीक है। नाउ मान लो कि ये लीव्स है इसके, तो मैंने ऊपर से टच करना स्टार्ट किया तो ये ऊपर से ऐसे करके क्लोज हो रहा है, राइट, टूवर्ड्स द डायरेक्शन। अभी मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ तो भी ये ऐसे ही ग्रो, ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब नॉट टूवर्ड्स द डायरेक्शन। दूसरा, अगर इफ सनलाइट गोज देन टू दे आर डूइंग दिस, मतलब अकेला टच से ही काम नहीं हो रहा है, दूसरे एस्पेक्ट से भी यही फिनोमिनन चालू है, उसे हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। और उसकी एग्जाम्पल है छुई मुई। छुई मुई को ऊपर से छुओ, नीचे से छुओ, बंद तो उसे ऊपर से ही होना है। तो ऊपर से ही बंद क्यों होना है और वो बंद होता क्यों है? क्वेश्चन ये है ना, हमेशा तो क्या होता है, हम छूते हैं तो बंद हो जाता है। तो चलो आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो। हम ऐसे प्लांट को बोलते हैं थिग्मोनेस्टिक। टच करने से बंद होता है ना, इसलिए इस प्लांट को बोलते हैं थिग्मोनेस्टी। अब देखो, the moment you touch this plant, ये पानी जो होता है ना, जैसे ही आपने यहाँ पे टच किया ना, that water will get lost। जैसे ही पानी चला जाएगा उसमें से, छुई मुई बंद। समझ आया कि नहीं? प्लांट में जाइलम होता है ना, पानी लाता है, तो जैसे ही आपने टच किया ना, जाइलम ने अपना फंक्शन बंद कर दिया, तो अब पानी नहीं है, तो वो अपने आप को, जो पानी है वो बचाने के लिए, ताकि वो ट्रांसपायर ना हो जाए, वो बंद कर देगा अपने लीव्स को। समझे? इसी की Yes, वजह से छुई मुई जब टच करते हैं तब बंद हो जाता है। अंडरस्टूड? ये मैंने अभी, जैसे सनलाइट है,
सनलाइट एक्सट्रीम है बेटा, तो उसे डर है कि कहीं मैं आई वोंट बी ड्रेनिंग माई वाटर मच, उस टाइम पे भी वो बंद हो जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ मॉनसून के टाइम पे अच्छा सा खुला मिलेगा, क्योंकि वाटर सप्लाई है इनफ, तो उसे वो डर नहीं होता। ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। यस चलो अभी लिखते हैं थोड़ा सा, मैं डिक्टेट करवा देती हूँ, आप लोग प्लीज लिख लो। ये डेफिनेशन लिख लिया ना, इसके बाद लिखना है। थिग्मोनेस्टी हेडिंग दे दो, दे दिया है तो मैं डेफिनेशन बोलूं। यस मैम। द नॉन डायरेक्शनल movement of plant part in response to touch of an object is called थिग्मोनेस्टी। एग्जाम्पल लिखा है मिमोसा पूरी का, लिख दो। अगर एक बार लिख लिया है तो दूसरी बार लिख दो। डन मैम। हाँ बेटा, एक्चुअली ये जो सोलन पार्ट है ना ब्रांच का, इसे हम पुलविनी कहते हैं। तो जब हम पुलविनी, इसे पुलविनी कहते हैं, तो जब इसको टच होता है ना, तो वहीं से रूट बंद होता है। मतलब आप कहीं कौन सा भी पार्ट आगे से टच करोगे ना, तो तुरंत वो इम्पैक्ट इधर जाएगा और इसलिए वो बंद हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, फोटोनेस्टी। क्या हुआ सर, हो गया आपका? हो गया लेक्चर? आप आ गए इधर? आपका नहीं, हाँ मेरा 9 में। आप ये मोबाइल इधर ही छोड़, मेरा लेक्चर टेक्निक है, ऑनलाइन है। नहीं सर, ऐसा मत करो ना, मैसेज आएंगे ना थोड़ा। ऐसा मत करो, घर से मैसेज आते हैं ना, ठीक है, तो तो थोड़ा। मुझे हाँ ओके, हो गया? क्या बोला अभी? फोटोनास्टी। फोटोनास्टी का मतलब है कि मुझे लाइट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब लाइट हो या ना हो मैं तो ग्रो होऊंगा। ठीक है, तो क्या हुआ, नॉन डायरेक्शनल जो आपने मूवमेंट लिखा था सिग्मो में, वहां पे जहां पे आपने टच यूज किया था ना, वहां पे हमको लिखना है सिर्फ लाइट। आगे थिग्मोनेस्टी का जो डेफिनेशन लिखा आपने, उसमें जहां टच वर्ड आता है उधर आप कर दोगे उसका लाइट। ओके मैम। हाँ ओके नहीं बेटा, करो अभी, लिखो। हाँ मैम, लिख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो मैं बताती हूँ। डन मैम। उसके एग्जाम्पल है बेटा, मून फ्लावर, सेकंड है डैंडेलियन। आप ना इसको गूगल करके देख सकते हो कैसे दिखते हैं, वैसे मैं बता देती हूँ, मेरे बुक में है,
इन्हें ना हम व्हाइट फ्लावर कहते हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, मून फ्लावर है ये, और ये ऐसा डेंडेलियन है। यू कैन ऑलवेज गूगल इट डाउन, राइट, कैसे दिखते हैं ये। अब डेंडेलियन है ना, तो क्या होता है, डे टाइम में खुलते हैं, नाइट टाइम में बंद हो जाते हैं। मतलब क्या, लाइट सेंसिटिव है। मून फ्लावर का उल्टा है, मून फ्लावर डे लाइट में बंद, और जब मून लाइट आएगी खुले, ये ऐसे, ठीक है। तो मतलब दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, ऐसा है। मेरे को सनलाइट से कुछ लेना देना ही नहीं, मैं अपने हिसाब से ही ग्रो होऊंगा, उसको फोटोसिंथेसिस की पड़ी ही नहीं है, वो हो जाएगा बॉडी में, ऐसा है। तो दे आर नॉन डायरेक्शनल, समझे, क्लियर? यस मैम। तो मेरे ख्याल से यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। इसके बाद फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन है, जहां से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, आप लोग याद रखना। अच्छा, फंक्शंस लिख सकते हैं इफ यू डोंट माइंड, 2 मिनट है ना हमारे पास? हाँ चलो ना, कोई बात नहीं, हाँ रहने दो हम लोग फंक्शन। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ 5 मिनट बिगाड़ेंगे प्लांट पे, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कुछ भी हो जाए नेक्स्ट लेक्चर से एब्सेंट मत रहना, नेक्स्ट लेक्चर से एब्सेंट मत रहना टिल आई कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दैट इज, मैं आपको ब्रेन सिखाने वाली हूँ इसमें, फिर मुझे मत बताना कि नहीं आता है। मेरी क्लास में प्रेजेंट तो ब्रेन आ जाएगा, एब्सेंट तो खुद से थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है बेटा। दूसरा होमवर्क, होमवर्क में क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर में जो करवाया, इस लेक्चर में जो करवाया, वो सब हम लर्न करेंगे, अंडरस्टूड? यस मैम। ठीक है, and things will be asked to you. If you fail to answer, you will write it 5 times. I'll pick up anyone and I'll question you. ठीक है। दूसरा, if you fail to answer me in the next lecture, then 50 times. थर्ड लेक्चर में अगर क्वेश्चन पूछा और नहीं आया, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इफ आई एम आस्किंग यू थर्ड टाइम, तो फिर 2-2 0 बढ़ते रहेंगे। उतनी बार तुमको मुझे लिख के वो चीज दिखाना होगा, ओके? चलो, बाय मैम। बाय बेटा, बाय। अच्छा, अभी सर का लेक्चर है, सो आई एम साइनिंग ऑफ।